Recording and streaming settings, bit rates, frame rates, they can all be a little confusing, can't they? Well, thankfully XSplit Gamecaster makes it super easy. And video devices. Correct one based on your connection quality. Keep in mind that the higher resolution your video goes, the lower quality image you will get for your given bitrate. Higher resolution makes or software X264. I have a plethora of videos covering AMD VCE. Performance is a serious problem for you. I wouldn't recommend using X264. So TLDW, for most people, second for audio for whatever number you come up with. Start by running a speed test on a site like openspeedtest.com or speedtest. If your internet connection sometimes gives problems streaming a constant bitrate and you don't want to lower your target bitrate, for example, you just sometimes have intermittent bits where it just doesn't stream enough, enabling adaptive will let it adjust on the fly to compensate for occasional chokes and keep things running smoothly. The next option is to add a stream delay. If you want there to be a more significant delay between what's happening in real time and what your viewers see, you can use this. This would be most helpful to prevent the concept of stream sniping, where competitive players watch the stream to find and beat the streamers in a game like a battle royale title, such as PUBG or Fortnite. Otherwise, most streamers want as little a delay as possible, so you can turn this off. Lastly, you have the option to record locally. This is a great option, as it means you can just immediately record an exact copy of your stream VOD every time you live stream without issues, without needing to remember to hit a button or anything like that. This is probably the best recording option for most streamers, ensuring you have a local copy of the VOD for archiving or editing later. For those looking to use Gamecaster to record videos instead of stream, let's tackle this next. I will say, if you're just tuning into this part from the timecode, that most of what I said about streaming applies here, and I don't want to just repeat myself. Also, the streaming settings already have an option to record and keep an exact copy of your VOD if you stream there, so that may be all you need. If you're wanting to record in a higher quality than you're streaming in, there are some considerations to keep in mind, which I discuss in a video later on in this course playlist. If you want to use the Gamecaster to record, click the recording section of the settings menu. Much like with streaming, you get to choose between automatic recording settings or managing your own custom recording profiles. We're gonna dive into that a little bit. There's also a new option for recordings here, however, called split recordings. When enabled, this allows you to set a file size at which Gamecaster will make a new file while it's recording. So every time it hits, say, 2 gigabytes or 4 gigabytes, every time it reaches that size, it will make a new recording file. This is useful if you don't want to deal with big, giant, multiple gigabyte files. And for today's video, I'm going to show you how to change the resolution if you're using XSplit. So this took me a minute to figure out. I had to do. Now I have a bunch of different, and then it'll display that for you. My first video just looked really bad just because it was a.
One of the most popular questions I get with how to live stream on YouTube 24/7 is how can I turn off my computer without losing my live stream? To second that, how do I set up a backup server to ensure my live stream is safe? I'll be answering these questions in this video. I just have to say thanks to everyone that participated in the 50,000 subscriber channel art giveaway. The winners will be shown on the screen now. If you did win, please contact me through Discord or my Twitter profile. Links are in the description. So how do I turn off my computer when live streaming? To do this, you will need to learn about a VPS or virtual private server. A VPS is a service sold and hosted by an internet hosting service, such as Amazon AWS or Google Cloud. These VPSs run separate copies of operating systems, allowing you to, for example, run Windows 10 on a Mac OS. These services are accessed through portals, such as the default remote desktop connection that is found on your Windows search menu. These portals allow you to access your server from any computer anywhere in the world. VPSs are mainly paid services that are cost dependent on the performance you require. Costs are usually monthly and not cheap. So now that you've learned about a VPS, you now know that you will need one to have the ability to stream while having your own personal computer turned off. But which VPSs do I recommend? At the moment, I only have experience with 3 different VPS hosting services, 2 of which I only use for backup streams and the other for a primary. The primary VPS I use and the only one I recommend for your primary is OBubble. OBubble is a VPS hosting service that specializes in live streams. Their servers are tailored specifically to the needs of a 24/7 live streamer, so you should experience little to no issues. OBubble features 4 different packages that are paid for monthly, although I only recommend the Gold and the Diamond package as they're the only ones that allow you to stream at 30 frames a second and have access to your own server through remote desktop. Some pros to OBubble is they have a guaranteed 99.9% uptime, their servers are reliable, they have multiple plans available to suit your needs, you can efficiently stream at 30 frames per second, and they have some of the best prices available. Unfortunately, OBubble isn't perfect as it does require a 2-week minimum startup wait. They clearly state on the website that they are a small company and manually set up all their servers, so it can take some time. Another issue I found is that you can efficiently stream at 30 frames per second, and they have some of the best prices available. Unfortunately, OBubble isn't perfect as it does require a 2-week minimum startup wait. They clearly state on the website that they are a small company and can be pretty difficult to answer any questions. Vulture. These are 2 VPS hosting providers that provide multiple packages available for use. With the CPU attached to the server, your stream will lag a lot. That is why I recommend only OBubble, as they do have GPUs or graphics cards installed into their servers, allowing you to stream at 30 frames per second. There are some other hosting providers that offer GPU VPSs, but they are all very expensive. So why do I need a backup server? A backup server is used to prevent your live stream from totally shutting down. If your primary stream on your VPS or personal computer crashes, the backup will save your stream. Since this doesn't, internet best choice would be the same, but your backup server runs on your own computer at home. If you are currently in the window of waiting for your OBubble server, or you don't plan on VPS such as but it'll be less likely that you gain any traction or optimization at the start, so try to avoid this. Just a quick note about the best standard or backup servers is between Hostwinds and Vulture. I do recommend Vulture over Hostwinds. This is because Vulture only charges you on what you use. Charges are only accumulated as your server is active, making it more cost effective if you decide you no longer want to live stream using a VPS. If you are using Vulture, any 4-core or more server will be sufficient. Setting up your backup server is very simple. The only difference between your primary server and your backup is the type of server it's labeled under your Stream tab in OBS. Instead of using primary ingestion server, use backup ingestion server and use the same stream key used for your primary. Just a final note about the backup.
Click on subscribe button, press on bell icon. कैसे फ्री सर्वर को यूज़ करें। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ दिन के लिए अपनी वेबसाइट की होस्टिंग हैंडल करनी है, सबसे पहले इसके अंदर आता है माइक्रोसॉफ्ट आज़ूरे। फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट आज़ूरे के अंदर यह है कि आप अगर न्यू यूज़र हो और आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो फ्रेंड्स आपको $200 का माइक्रोसॉफ्ट आज़ूरे की तरफ से फ्री क्रेडिट मिलेगा, जो आपके आज़ूरे अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली आपको क्रेडिट मिलेगा, जिससे आप अपना सर्वर बना सकते हो। और अगर फ्रेंड्स आप एक स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे $100 का मिलेगा। बट फ्रेंड्स हम यहाँ पे $200 वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले तो जो 12 मंथ तक है तो आपको फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत सी सर्विसेज है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेंगी वो सर्विस। और फ्रेंड्स इसके बाद है आपको यहाँ पे 12 मंथ के लिए सबसे पहले तो सर्विसेज फ्री मिलेंगी। उसके बाद आपको $200 अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट मिलेंगे आपको फ्री, एकदम फ्री। और उसके बाद आपको 25 से ज़्यादा आपको यहाँ पे सर्विसेज मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री आज़ूरे के अंदर। तो फ्रेंड्स इस माइक्रोसॉफ्ट आज़ूरे से आप इजीली अपने लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अब फ्रेंड्स उसके बाद आता है गूगल का क्लाउड सर्वर। फ्रेंड्स मैंने क्लाउड सर्वर को यूज़ नहीं किया है और तो ये मुझे गूगल का थोड़ा सा नॉलेज भी कम है, बट फ्रेंड्स हम गूगल से भी इजीली हमारे VPS बना सकते हैं। तो आता है अमेजन AWS। फ्रेंड्स इसका सिस्टम बहुत अलग है काम करने का, इसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स इसका तरीका यह है कि इसमें दोस्तों हमें कुछ भी है कि आप इसके अंदर जैसे अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बना के आप अपने AWS के अंदर लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सर्वर की लिस्ट दिखाई देगी और आपको एक सर्वर दिखाई देगा जहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा फ्री, तो वह आपका कम्प्लीटली फ्री में आपको वो मिलेगा। बट फ्रेंड्स उसके नीचे और भी हाई पावर के जो VPS आते हैं वो VPS आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसके अंदर हाई पावर की VPS भी यूज़ ले सकते हो, बट फ्रेंड्स आपको उनके लिए भी पैसा तो एक भी नहीं देना, बट फ्रेंड्स उनका बिल बनता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इनका बिल नहीं दोगे तो फ्रेंड्स आपका कुछ भी नहीं होगा। जो ओनली अकाउंट है, जो अमेजन AWS का अकाउंट है, वो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा ड्यू टू पेमेंट। इस टाइटल के नाम से आपके ये अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप अमेजन AWS को भी ट्राई कर सकते हो फ्री ट्रायल के अंदर। अगर आप हाई पावर का CPU यूज़ में लेते हो यानी कि VPS यूज़ में लेते हो तो आपको 1 महीने तक का यहाँ पे फ्री ट्रायल मिलेगा। और 1 महीने की फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री ट्रायल नहीं मिलता, हाई पावर VPS के अंदर आपको 1 महीने का बिल बन जाता है और अगर आप बिल नहीं देते तो आपका यहाँ पे अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पे अमेजन AWS का सर्वर, अच्छे हैं, क्वालिटी भी बढ़िया है। बट फ्रेंड्स अगर आप कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से बंदे फ्रेंड्स इससे बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, यूज़ लेते और 1 महीने बाद अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यह वैसे तो सही नहीं है, बट आप भी इसको ट्रैक कर सकते हो ओनली कुछ लेवल तक। अब फ्रेंड्स मैं आपको 3rd नंबर पे बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट जिसे फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ किसी भी इंडियन को यूज़ में नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स मैं खुद भी इंडियन हूँ तो मैं भी ऐसी साइट को यूज़ में नहीं लेता। फ्रेंड्स ये है अलीबाबा। अलीबाबा के फ्रेंड्स आपने बहुत से ऐड देखे होंगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कि अलीबाबा की तरफ से हमें फ्री में क्लाउड मिल रहा है $300 या फिर जो भी $200 या $300 का जो हमें इसकी तरफ से ट्रायल मिल रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला तो ये है कि मैं कभी भी मेड इन चाइना का ऐड नहीं करता और न ही मेरे वीडियो के अंदर कभी मेड इन चाइना की चीज़ दिखाता हूँ। या मैंने ओनली इसलिए बताया है कि एक जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता चले कि मैंने इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताया, बट आपको इसको यूज़ में नहीं लेना है। फ्रेंड्स मैं सीधी सी बात बता देता हूँ कि हम इंडियन है और हम बिल्कुल भी चाइना की चीज़ों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं ओनली अलीबाबा की आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं इसका काम करने का तरीका मैंने भी काम में नहीं लिया और मेरे को भी इसका पता नहीं है। बट फ्रेंड्स अब आप इसके अंदर देख सकते हैं लॉगिन करने पे यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, इंडिविजुअल और एंटरप्राइज। फ्रेंड्स अगर आप एंटरप्राइज के ऊपर क्लिक करके अपना VPS बनाना चाहते हो तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे 2 कोर CPU 4 GB रैम ऐसे आपको यहाँ पे फ्रेंड्स 2 मंथ का और 1 मंथ का 2 तरह का फ्री का ट्रायल मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स ये है कि यह बंदे इस तरह के हमारी डिटेल मांगते हैं अगर आप एंटरप्राइज के साथ इसमें लॉगिन करते हो, जो आपको किसी भी चाइना के कंपनी के साथ तो शेयर नहीं करनी चाहिए, ऐसी डिटेलें मांगती है। तो फ्रेंड्स मैं तो बोलता हूँ अगर आप एंटरप्राइजेज भी हो तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लगा के चाहे इंडियन चीज़ ले लो, बट चाइना की चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ख़ास तौर से ऐसी कंपनियों का जो हमारी बिजनेस की कुछ ज़्यादा ही पर्सनल डिटेल मांगते हो। फ्रेंड्स आप पता नहीं सर्टिफिकेट और ये 70 चीज़ें मांगते हैं। तो फ्रेंड्स इसका तो ये सीन है अलीबाबा एंटरप्राइज़ का। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको अलीबाबा इंडिविजुअल के बारे में। फ्रेंड्स इसमें यह है कि यह आपको ऐसा सर्वर देंगे जिसको आप फ्री में भी यूज़ नहीं करना चाहोगे, इतना घटिया सर्वर देता है। फ्रेंड्स इसका मैं सबसे हाई क्वालिटी का ये में सर्वर देते हैं फ्री के अंदर
2 कोर और 4 GB रैम का, जिसके अंदर हमें 50 GB डेटा ट्रांसफ़र देते हैं। फ्रेंड्स मेरा 50 GB डेटा ट्रांसफ़र तो 4 दिन में हो जाता है जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इतने ये लो कैटेगरी के देते हैं कि फ्री में भी हम यूज़ लेना पसंद नहीं करें। तो फ्रेंड्स ये है कि आपको चाइना की चीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं लेना है यूज़ में। आप यूज़ में लो, अमेज़न को यूज़ में लो, माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ में लो। और अगर आपको इनके यूज़ के अंदर कुछ भी दिक्कत आ रही है, फ्रेंड्स मैंने पर्सनली इन दोनों को यूज़ करा है, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट को। तो आप मुझसे कुछ भी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर सवाल पूछ लीजिए अकाउंट क्रिएट करने में या VPS बनाने में, मैं आपको पूरी डिटेल्स में बता दूंगा मैसेज के अंदर। अब फ्रेंड्स इसके बाद अगर फ्रेंड्स आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो कि फ्री VPS, तो फ्रेंड्स बहुत सी साइट्स आ जाएंगी, ऐसी वेबसाइट, ब्रांडेड वेबसाइट के अलावा ऐसी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनका हमने नाम ही पहली बार सुना है, जो हमें फ्री में VPS देती है। फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ उनको बिल्कुल भी यूज़ में मत लेना। अगर आप उनको यूज़ में लोगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा तो कुछ ही नहीं होगा, बट जो भी आपकी डिटेल है, जो आपकी पर्सनल डिटेल है और आप अपना कुछ पर्सनल काम कर रहे हो VPS के अंदर, वो आपका लीक हो जाएगा और उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो फ्रेंड्स फ्री के अंदर तो आप ओनली जैसे अमेज़न हुआ, गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, इन्हीं को यूज़ में लीजिए, अदर को यूज़ में मत लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि फ्रेंड्स हम किस तरीके से YouTube के ऊपर 24/7 लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैंने कम्प्लीटली ये सब कुछ बताया है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आपको ये पूरा वीडियो देखना है। सब कुछ इसी वीडियो के अंदर मैंने इसमें बता रखा है। तो फ्रेंड्स हम इसके अंदर मैं आपको कम्प्लीटली तरीके से बता दूंगा कि हम YouTube के ऊपर लाइव स्ट्रीम कैसे करें, वो भी 24/7। तो फ्रेंड्स हम जब भी YouTube के ऊपर लाइव स्ट्रीम करते हैं, कोई भी नॉर्मली भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो हमें हमारे दिमाग में आता है कि हम लैपटॉप से लाइव स्ट्रीम करते हैं और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमारा लैपटॉप एनी टाइम चार्ज है या फिर हमारा डेस्कटॉप है तो वो चलता रहे और अनलिमिटेड डेटा। अगर फ्रेंड्स आप इन सब के साथ 24/7 लाइव स्ट्रीम करने की सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि लाइव स्ट्रीम इनसे कभी भी नहीं होती, वो भी 24/7। इनसे ओनली हम गेमिंग की लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें 24/7 लाइव स्ट्रीम करनी है तो हमें उसके लिए चाहिए VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है तो आप एक सक्सेसफुल लाइव स्ट्रीम कर सकते हो YouTube के ऊपर, जिससे आपकी अच्छी खासी इनकम भी बढ़ेगी और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए 2 वेबसाइट्स है जो हमें बेस्ट सर्वर प्रोवाइड करवाती है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो हमें बेस्ट है। फ्रेंड्स सबसे पहले ओबबल। फ्रेंड ओबबल के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सर्वर आते हैं और ये बस इसके सर्वर थोड़े से कॉस्टली हैं, थोड़े से महंगे ज़्यादा पड़ते हैं, बट फ्रेंड्स लाइव स्ट्रीम के लिए एकदम स्मूथली काम करते हैं और ये फ्रेंड्स एकदम बेस्ट कंपनी है ओबबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री VPS में OBS कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उससे पहले मेरी तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारा पाक होम यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। सही यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स मैं एक्टिवेट शेयर करूंगा ऊपर, इसको आप मत देखें वरना घबरा जाएंगे। नहीं मिलता परचेस करने के बाद, और वल्चर के अंदर हमें 15 मिनट के अंदर हमारे लिए यही VPS काफी OBS चलाने के लिए सही। वल्चर ही यहाँ पे यूज करता हूँ। इसका आप सेटअप मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर भी चल जाएगा OBS। पैसा है तो आप और एक सक्सेसफुल लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप ओबबल को ही यूज में। ये हमारे पास गूगल क्लाउड खुल गया। अब फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे एक और लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें तो आपको ये पोस्ट खुल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कमांड है, कुछ ट्यूटोरियल मेरा बन रहा है अभी, कमिंग सून है। और यहाँ पे अभी ये डॉकर रन है, पहला आपको कॉपी करके हमें चलाना है। तो फ्रेंड्स परचेस करने के बाद क्या होता है कि ओबबल वाले हमें एंड टू एंड सर्वर नहीं देते, इसके बाद फ्रेंड्स डिटेल नहीं देते। ये 10 से 15 दिन हमें यहाँ पे कुछ रिपोजिटरी इंस्टॉल करनी है। सही, 1 महीना भी सारी कमांडें मैंने जमा करके रखी हुई हैं, इसलिए हमें पैसे देने के 1 महीने बाद तक इसमें हमें वेट करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स इसको जरा सा थोड़ा सा इसको मैं स्किप करूँगा ताकि इसको कॉपी करे, इसके अंदर जैसे 500 से 1000 लोग हमारे तो सुकून से करता रहूँगा हमारी लाइव स्ट्रीम को देखते हैं, तो ओबबल्स के लिए बेस्ट है। और फ्रेंड्स ये ओबबल की कमांड कॉपी की यहाँ पे इसके प्लान यहाँ पे टर्मिनल खोल लें। सबसे जो छोटा प्लान है वो $20 का है, जो सबसे बड़ा प्लान है वो $70 का है।
और फ्रेंड्स इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है। पोर्ट में डालें और यहाँ पे पेस्ट करें। ये मैं भी बहुत कम यूज़ में लेता हूँ वो बबल को, और मैंने शायद इसे एक ही बार यूज़ में लिया अब तक। और फ्रेंड्स मैं हमेशा वल्चर को यूज़ में लेता हूँ, और ये एकदम इसके भी यानी कि सर्वर लाइव स्ट्रीम के लिए बढ़िया। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे वल्चर की डिटेल बताता हूँ। फ्रेंड्स वल्चर की जो सर्वर स्पीड है वह इसकी ऑसम स्पीड है एकदम, हम बहुत बढ़िया स्पीड है इसकी, और हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वह कभी भी इसके अंदर अटकती नहीं है। और फ्रेंड्स प्राइस एकदम मैंने आपको पहले बता दी, प्राइसिंग इसकी बहुत कम है, तो हम इजीली सस्ते के अंदर अच्छा सर्वर यूज़ ले सकते हैं। और फ्रेंड्स जब भी हम इससे वल्चर से सर्वर परचेज करते हैं तो फ्रेंड्स हम इसके अंदर हमें ओनली 15 मिनट फाइनली के अंदर फ्रेंड्स हम अपना OBS इंस्टॉल कर रहे हैं आप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अंदर यह होता है कि अभी इसके अंदर एक ऑफर चल रहा है जिसके अंदर हमें $50 फ्री क्रेडिट मिल जाएगा वल्चर अकाउंट के अंदर, अगर आप इसके ऊपर नया अकाउंट बनाए तो। फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते आपको $50 का फ्री क्रेडिट मिल जाएगा वल्चर में, और आप ओनली $10 के अंदर आप अपनी 1 महीने की लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स इसके अंदर हम सर्वर कैसे बनाते हैं वल्चर के अंदर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारा सर्वर लोकेशन सिलेक्ट करना होता है। फ्रेंड्स हम रेडी हो गए, अब हम यहाँ से अपना OBS स्टार्ट करेंगे। सही लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्वर ले लीजिए। फ्रेंड्स मैं सिंपली आपने लिखना है OBS ले लेता हूँ, एंटर। अब उसके बाद हमारा सर्वर टाइप, और फ्रेंड्स हमारा OBS स्टार्ट हो गया। और आप अब iOS इमेज में यहाँ पे अपलोड कर सकते यस हो। करते हैं, और अगर आपको नहीं करनी है आपको एक ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर बाद में करेंगे। विंडो भी ले सकते हो, और बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है आप यहाँ से इन्हें ले सकते हो। उसके बाद जो OBS स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स आप ओनली इसके अंदर फ्रेंड्स हमारे पर आवर की ये है हमारा OBS, आप इसमें लाइव स्ट्रीम लगा सकते हैं, आप बड़ा सर्वर भी ले सकते हैं। बट फ्रेंड्स ये कि वो हमारा जो आपने करना है करें, हो जाएगा सही जो भी हमारा बैलेंस है। तो फ्रेंड मैं तो इसके अंदर प्रोफाइल बनना है, जो करना है करें, मसला ही नहीं है। सीन ऐड कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं। सॉरी टोटल मेरे यहाँ पे $56 हो गए, और यहाँ पे पर आवर की मेरी प्राइसिंग लगती है तो मेरे कोई दिक्कत भी नहीं है। डिप्लॉय नाउ पे क्लिक करने पर हमारे यहाँ पे सर्वर बन जाएगा। यहाँ पे $16 हमारे विंडोज के, और बाकी के $40 है जो यहाँ पे इनकी मशीन के। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जिसका नाम है रोजबर्ग। मैंने फ्रेंड्स आप इस ऐप के अंदर देख सकते हैं बहुत से हमारे सामने इसमें आर्टिकल आ जाएंगे, न्यूज़ आ जाएंगे, जिस भी तरह के आपको यहाँ पे आर्टिकल चाहिए, न्यूज़ चाहिए, वो इस ऐप के अंदर अवेलेबल है। और फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूज़ की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको न्यूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो फ्रेंड्स ये ऐप आपके लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे आपको अगर पॉलिटिकल की न्यूज़ देखनी है, एस्ट्रोलॉजी, वर्ल्ड न्यूज़, क्रिकेट न्यूज़, फैशन न्यूज़, हर तरह की यहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाएगी। न्यूज़ के आर्टिकल्स मिल जाएंगे और न्यूज़ के वीडियोज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये ऐप है, और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका डाउनलोड लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम हर तरीके के यहाँ पे जो वीडियोस है फ्रेंड्स, बहुत से जो यहाँ पे कॉमेडी वीडियो है, प्रैंक वीडियोस है, वो भी हम यहाँ पे इसमें देख सकते हैं इसी ऐप के अंदर। फ्रेंड्स इस ऐप के अंदर सब कुछ है, आर्टिकल, वीडियो, सब कुछ। और फ्रेंड्स एक सबसे जो मोस्ट है वह फ्रेंड्स इसके अंदर मैं यहाँ पे जैसे कि आपको अभी सबसे पहले हम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे 3 तरीके से इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो, फेसबुक, गूगल और अपने फ़ोन नंबर के साथ आप इस ऐप के अंदर लॉगिन कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसके अंदर एक और सिस्टम यह है जो सबसे बढ़िया सिस्टम है कि आप इसके अंदर अपने खुद के छोटे छोटे जो 10, 15, 20 सेकंड की वीडियोज़ को बना के पब्लिश कर सकते हो, जिससे आप भी फ्रेंड्स फेमस हो जाओगे और आपके यहाँ पे वीडियोज़ भी बहुत। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने VPS के अंदर लॉगिन कर सकते हो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के अंदर रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। और फ्रेंड्स इसके अंदर जो वल्चर वेबसाइट है फ्रेंड, वल्चर वाले हमें VPS से कनेक्ट करने के लिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एक है विंडोज़ का, जिसके थ्रू हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमें वल्चर वाले हमारा IP एड्रेस देते हैं, जो भी VPS का IP एड्रेस है उसका यूजर नेम और पासवर्ड में देते हैं। और फ्रेंड्स हमें इसके अंदर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमारी स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करके हमें रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो आप देख सकते हैं जो वल्चर वेबसाइट है, इन्होंने हमें यहाँ पे एक IP एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, IP एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो IP एड्रेस हमने कॉपी किया था उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद जो नीचे यूज़र नेम है, यूज़र नेम हमें एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम डाल देंगे। अब यूज़र नेम मेरे यहाँ पे टाइप करने के बाद हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट किया। अब कनेक्ट करने के बाद हमसे एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड पूछ रहा है। और फ्रेंड्स पासवर्ड भी हमें वहाँ पे वल्चर वाले दे रखे हैं, तो मैं क्लिक करके और ये हमने यहाँ पे पासवर्ड कॉपी कर लिए और इसके अंदर हम पासवर्ड पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया।
तो फ्रेंड्स अभी हम से यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स को हम यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के अंदर, यानी कि हम हमारी वीपीएस के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी मैं करंटली में लाइव हूँ। फ्रेंड्स मैं जो वल्चर सर्वर के साथ उसके साथ में यहाँ पे मेरी टॉप 50 इंडियन यूट्यूबर्स की लाइव सब्सक्राइबर काउंट अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रखा हूँ। और फ्रेंड्स मैं भी खुद भी पर्सनली इसे यूज़ में लेता हूँ क्योंकि इसकी प्राइस भी थोड़ी कम है और यह है एकदम ईजी है फ्रेंड्स रिमोट डेस्कटॉप के साथ यूज़ करना। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी लाइव स्ट्रीम है 30 FPS के साथ यहाँ पे लाइव स्ट्रीम हो रही है और एकदम बढ़िया से यहाँ पे लाइव स्ट्रीम हो रही है। और इंटरनेट कनेक्शन भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन लाइट आ रही है, यानी कि हमारे जो कनेक्शन है उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स यह था, इस तरीके से हम हमारे रिमोट डेस्कटॉप के अंदर लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे लॉगिन तो कर लेते और हमने यहाँ पे हमारी लाइव स्ट्रीम चला दी। तो चलाने के बाद आप ऊपर 3 तरह के बटन देख सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, इसके अंदर लिखा हुआ है फ्रेंड्स जब भी हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो डिस्कनेक्ट करने पे हमारा जो वीपीएस है उसके अंदर जो भी चल रहा है वह बंद नहीं होता, ओनली वो वीपीएस जो हमारे विंडो के अंदर ओपन है वो ही बंद होता है, उसकी स्क्रीन बंद होती है और वो वहाँ से बंद नहीं होता, वहाँ से वो कंटिन्यू चलता रहता है। अब फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो फ्रेंड्स यूट्यूब के अंदर भी स्ट्रीम 2 तरीके की चलती है, पहली है प्राइमरी स्ट्रीम और सेकंड है बैकअप स्ट्रीम। और फ्रेंड्स अगर आप अच्छी खासी लाइव स्ट्रीम कर रहे हो और आपके पास बढ़िया सा पैसा है लाइव स्ट्रीम के लिए तो फ्रेंड्स आप प्राइमरी स्ट्रीम ओ बबल से कीजिए और बैकअप स्ट्रीम वल्चर से कीजिए। अब फ्रेंड्स मैं इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स जो प्राइमरी स्ट्रीम है वैसे हम जो भी नॉर्मली स्ट्रीम करते हैं तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रीम ही होती है, बट फ्रेंड्स कभी भी किसी कारण से अगर हमारी स्ट्रीम बंद हो जाती है या फिर जो कंपनी है जहाँ से हमने सर्वर ले रखा है उनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और वहाँ से सर्वर बंद हो गया तो फ्रेंड्स हमारी प्राइमरी स्ट्रीम यहाँ पे बंद हो जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 स्ट्रीम चला के रखते हैं, प्राइमरी स्ट्रीम और बैकअप स्ट्रीम। अभी हमें यहाँ पे बैकअप स्ट्रीम चलानी है तो हम यहाँ पे इसका ओनली यहाँ पे सर्वर के ऊपर क्लिक करके इसको जो प्राइमरी स्ट्रीम है यहाँ पे हम बैकअप कर देंगे। फ्रेंड्स जब भी हमारी प्राइमरी स्ट्रीम बंद हो जाती है और बैकअप स्ट्रीम अगर हमने चालू कर रखी है तो प्राइमरी स्ट्रीम के बंद होते ही ऑटोमेटिकली बैकअप स्ट्रीम लाइव आ जाती है और जो हमारी स्ट्रीम है वह कंटिन्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हमें ओबीएस के अंदर हम यहाँ पे फ्रेंड्स क्लिक करके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया प्राइमरी स्ट्रीम भी हम इसी से चला सकते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे बैकअप स्ट्रीम भी चला सकते हैं ओबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप 2 कंपनियों से सर्वर लीजिए, ओ बबल और वल्चर से, और दोनों से आप यहाँ पे एक से प्राइमरी स्ट्रीम चलाइए और एक से बैकअप स्ट्रीम। तो इस तरीके से आप अपने सक्सेसफुल लाइव स्ट्रीम कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। I'm going to show you how to make your live streams look professional using OBS, and we're starting right now. What is going on? My name is Nick. Welcome to another video. If this is your first time here and you want to learn how to grow your channel and make videos and all types of other YouTube related stuff, make sure to hit the subscribe button and the bell notification icon so you can be notified when I go live to answer your YouTube questions. Okay, so we're going to have to be in front of the computer for this one, but before we go, I want to let you know that you want to watch this entire video because I'm going to hook you up with something for free. That's right, 100% free, zip, zero, zilch, nada money out of your pocket because you're a subscriber and I want you to know I appreciate you. Okay, enough of that, let's go to the computer. Okay, so here we are at the computer, and the very first thing that is extremely important when you are trying to make your live streams look professional is, of course, the actual camera or the camera quality that you're using. For my live streams, you can see, I'll put some links in the description to some of those, but you can see the quality that I get from the Logitech C922 webcam,
which is actually what you're seeing this on right now as well. And another thing that is extremely important about making your live streams look professional is your background environment. Now, with mine, I like to set it to where, you know, it has kind of a mood to it, but the big idea for your background is just to make sure that it's nice and clean. Make sure that there's not junk all over the place, and, you know, make sure it's not too distracting as far as, you know, detracting from the message that you're trying to share. Now, one thing that you can do for your live streams that can really help make your live stream look professional is you can add an intro to it, just like you would if you were adding an intro to a video. And I'm going to show you how to do that right now. So what you want to do is you want to go into your OBS sources menu down here on the left, and you want to click on the plus icon. And when you are doing this, just a little side note here, when you're doing this, one thing that you want to make sure that you keep in mind is that you need a video file to work with. So you want to make sure that you have already exported your intro out of your video editing software so that you can import it into OBS. So we're going to go into the media source option, and I'm going to just type in intro, and then now it's going to ask me where my intro is. Now, for me, when the intro comes in, I don't want it to keep playing. I don't want it to loop, so I want to make sure that loop is not checked here in the box. And then I want to browse for the actual intro itself. And here in my stream folder, I have an intro file that shows my intro, and I'm going to show you basically how this would work. So I'm going to click on this, I'm going to hit open, and then I'm going to hit OK to close this box. Now, how this would work is, let's say that we do an intro and, you know, basically the hook for our live stream, and we say, you know, in this video, I'm going to show you how to make your OBS streams look professional, and we're starting right now. And then the intro would come in, and then it disappears because I didn't set it to loop. So basically it comes in, does the flash, and then it's out of there. So once again, it would be just like this. All you have to do is you turn it on, and then you transition in whenever you want that intro to start playing. So in this video, I'm going to show you how to make OBS live streams look professional, and we're starting right now. What is going on? My name is Nick. Welcome to another video. If this is your first time here, okay, you see, so basically you can use that intro as just a short bumper that will transition you into the next scene of your live stream, the next part of your live stream, and still get your branding in there. Now, another thing you can do is you can add a lower third to your live stream that will help you introduce yourself or introduce, you know, who you are. In order to do that, I'm going to go through the same process. I'm going to go here and I'm going to add another media source, and we're going to call this one lower third. And then from there, I'm also going to browse for this, and we will go with this one. Okay, so as you can see here, this lower third now pops up on the screen, and this is actually down here just at the bottom. And for this one, I'm actually wanting it to loop so that it actually stays on the screen. So as you can see here, when I didn't have that on, it basically played, then it disappeared. But now, since I have it to loop, it's going to always be on the screen until I actually go through the process of turning it off. So with this lower third graphic, you know, next thing you want to do is you want to add some text to actually let people know, you know, let people know who you are. So here we are going to go into the text, and I'm just going to put name, and I'm going to select the font. Here I'm going to go ahead and use alternate Gothic, and I'm going to put it at, let's say, 48 for the size. I'm going to hit OK. And then I hit OK. Now, as you can see here, the name part is just not showing up, so I actually had to click transition for that to come in for some reason. And here I just basically want to drag it up to increase the size, bump it into place. And then now when I transition this in to the actual scene, then I have, you know, like a nice professional looking thing down here in the bottom that says who I am, and it also says what the stream is about. Now, one thing that you can do with these is you can also, let's say that you don't want your full name down there and you don't want all this other stuff, but you want an actual legit lower third, you can do the same thing by just moving this over to the side like this, and then changing your text. I'm going to change the name here, and I'm just going to put my name on here. So we'll make this fill it up just a little bit more, and then we will scoot this out as well so it's framed in there nicely. And then when we transition that in, then this way it is just a simple name
that comes in. So as you're streaming, and you can do this, in a multitude of colors or anything like that. So basically the reason for this and the reason to add a lower third to your videos, and you can add your name plus your website, your name plus your YouTube channel or anything like that. But the advantage of this is basically it lets people that are not familiar with you yet know who you are. So to get that out of there, I'm going to go ahead and just turn those off, and then I'm going to click transition so that it is no longer in our scene. Another thing that you can do here to make your live streams look more professional, in addition to the camera, in addition to making your background look nice, in addition to adding your intro and a nice looking lower third, is you can also add other graphics to your scene. So in order to do that, I actually made another video about how to do an actual ticker on the bottom. I'll put a link to that up at the top of the screen right now. But you can also just add the images in here by themselves. Whatever it is, that you want to put on your image, then here, just a little reminder for people to subscribe to the channel. And another one that I can add here, like I did before, is I can also add the ticker background, and then the text would be scrolling on this, which is something that I show you how to set up in that other video. But let's say that we don't want to do that particular ticker setup, which you could also use that lower third graphic for, by the way. But let's say you don't want to use that ticker setup. Another thing that you could do is you can add your social media slideshow. So basically what you do is you go ahead and you make some graphics for your Twitter account, for your Instagram account, for your Snapchat account, or your website, anything that you want to promote really. And you can actually have those slide across the screen in random intervals during your live stream. So, without even having to do anything. So all you have to do is you set it up first, and I'm just going to call this social media. And here, for the transition, I'm actually going to change it to a slide instead of a fade. But depending on how you like things to look, you can definitely change this to anything that you would prefer to make it. Next, I'm going to add the different image files. In mine, I've already made these, so I'm going to add all 3 of those in here. And as you can see, it's now going to make these slide across my screen in random intervals. So one thing that you can do is, of course, you can move this frame so that this is at the very bottom of your screen, so it's not as distracting. Another thing that you can do that I found is if you want to have these come on your screen sometimes, but not a lot. Like let's say that you want, a nice space between all of the different social media tags, then all you have to do is you go into your properties for that, and you also add some blank files as well. And by doing that, it makes all of this not as distracting. So I'm going to add just a few more, just so I can show you the effect that this has on how everything is scrolling through. Okay, so now that we've changed that, what happens is, let me transition in, is basically you have a blank space in between your social media tags. So when they do come in, just like that, it makes a little bit more of an impact when it comes in. So that's another thing that you can do to help make your streams look more professional. And in addition to that, you can use it to promote your social media accounts. You can use it to promote whatever other stuff that you happen to be working on, or anything else that's coming up in the future, or really anything that you want. And of course, when a live stream ends, it helps make it look more professional, if you think of it just like it's a normal video on YouTube. So as an example, what I'm going to do here is I'm actually going to add another image, and this image is actually my end screen. So I'm going to add this end screen just like I normally do, so that when my stream is over, or when it's getting ready to be over, I would basically prepare it like this. I would scoot over, so that I can frame myself in the graphic, a little bit better, like you can see here. And then I would transition it in, and I would say, if you are not already subscribed, make sure that you hit the round subscribe icon right now so you don't miss any videos in the future. Thank you so much for watching. I'll see you next time. So basically you end it just like you would a normal video, so that when you're finished with your stream, you can go into YouTube, you can cut off any end parts or anything like that, so that you can still utilize your end screen graphic. If you currently do not have end screen graphics, but you want them, or you want custom branding for your channel, you can get all of that over at tubertools.com. I'll put a link to that down in the description below. Now, what I mentioned before is that I'm going to be giving something away in this live stream. I'm actually going to be giving away
three things in this live stream. All three of them are actually the lower third graphics that you see here. Basically, it's just a simple lower third graphic with a little shine going across it. I made this one so that it, so maybe for the gamers out there, because I know I don't do a lot for you gamers out there. I also have another one that has a different look to it, and you're basically getting all of these. This one is more of a, light leak fade in and out, which is pretty cool. And I have another one that is just a little bit more basic, the same idea, and that one looks like this, to where, it's just a more of a plain one, so you can still put your text on there and things like that, but it's still got that motion to it. And as long as you're using OBS, this is definitely going to work. You can see it right here on my screen that it'll definitely work for you as well. In order to get this, as soon as this video is finished, you want to go down into the description and you want to look for a link that says join my VIP area. It's absolutely free, and you join that, and inside you will be able to download these lower third graphics. If you are not already subscribed, go ahead and hit the round subscribe icon right now so you don't miss anything in the future. Thank you so much for watching. I'll see you next time. In this OBS Studio tutorial, I'm going to show you how to make your live streams look awesome, and we're starting right now. What is going on? My name is Nick. Welcome to another video. If this is your first time here and you want to learn how to grow your channel, make videos, and all types of other YouTube related stuff, start now by subscribing and clicking the bell so you don't miss anything. You're going to love this. I'm not going to waste any time. Let's go to the computer. Okay, so now that we're at the computer, I'm going to show you how to take a boring looking scene like this and make it into something like this, where you can have chat on it, to where you can do like video transitions and things like that. You can also do it to where you add tickers, to where you have like a little sidebar to where you're doing like a split screen, and you can transfer everything back and forth super easy, and it can be cool with the transitions as well. Of course, you wouldn't want to use transitions as heavy as I just did, but I'm just showing you the example of what it is that I'm going to be showing you. So the first thing that we need to do in order to get all of this stuff rolling is we need to go up to the scene selection or scene collection and select new, and that's going to blank everything out. As soon as I do this, it's going to remove my webcam, so I'm going to add that in as well and show you how to do that also. So for this, I'm just going to call this TB demo, and as you can see, it took away my webcam, so I'm going to go ahead and add that by adding a capture device. I'm just going to call that webcam, and that will get us taken care of there. Now, as you can see, when it first came on, it's really zoomed in and blown up, and on yours, if you see it and it comes in like this, all you have to do to fix that is you just change the resolution down here to custom, and then you change it to the actual frame size that you're going to be going out at. In my case, it's 1920 by 1080, and then I hit OK, and then as you can see, it brings everything, to the normal ratio. So once I have that in place, this is going to be my blank starting point. So once I have that in place, I'm going to go down to my scenes down here in the bottom left-hand side of the screen, and I'm going to choose rename. And then for this one, I'm just going to change this to main plane. And then that tells me anytime I click on this, anytime I transition to this, no matter what, it's just going to be a plain thing that's happening, just me right here on the screen. So the next thing that I want to do is I want to build onto this. So I'm going to duplicate it here. I'm going to right click on main plane, and I'm going to hit duplicate. And then I'm going to do main with a ticker. And then what that gives me the ability to do is add additional sources over here. So I have one scene here that nothing else is going to be on, and then this one here is going to be all of the ticker graphics to make the actual ticker that goes along the bottom of the screen. So here I'm going to click plus, I'm going to go to image, I'm going to do ticker BG for ticker background. And when I do that, it's going to ask me where the file is. So here I'm going to click on ticker BG, hit OK. And then there you can see this graphic that is now showing up at the bottom of my screen. Now, how this is going to work is it's going to be this graphic, and then I'm going to have a layer of text. And then after that layer of text, then I'm going to have a covering graphic as well. So the next thing that I'm going to do is I'm going to hit plus, and then I'm going to add that covering graphic right now. So I'm going to do ticker top, and I'm going to grab this. Now, as you can see right here, when I pull this in, if you look at this little area right here, you can see it's transparent. Okay, so basically what's happening here is this is going to allow the text to show up, to appear behind this, and then disappear
into this side as well while keeping the TubeBuddy logo in there. So I'm going to hit OK. Now with this, just so you know what's going on, is all of this stuff that I'm showing you right now, I actually built this for TubeBuddy for the stream that I do there. So if you want to learn even more YouTube stuff, I'm going to put a link to the TubeBuddy channel. So you can definitely head over to them, because me and other YouTube experts are over there, sharing information to help you grow your channels as well. So the next thing that we want to do is I'm going to actually click on the little lock icon for all three of these. And the reason I'm doing that is because I'm going to have to move the text around once I get it in here. So if I have these locked, then I can click anywhere on the screen, move anything that I want, and nothing is going to be selected or moved. So it's just kind of like a fail-safe. Click on plus, and then I'm going to go to text. And then here, I'm just going to make sure that says text. And then here, I'm going to put in just anything for the sake of the demo. And then once I have what it is that I'm going to be saying in the text, you can see it right up here at the top. You can see it's kind of small, but what I'm going to do is I'm going to go into select font, and in this case, I'm actually going to find the font that I was using. This is a really cool thing about OBS, is it lets you select different fonts, so you can make sure that things are matching up with your branding and all of that. So I'm going to select a different font, I'm going to hit OK, and then I'm going to click OK on this as well. Once I have that in place, then I can grab the text and I can bring it down. Now, as you can see, it's really small right now, so on a mobile device, this would be pretty much impossible to read. So I'm going to grab one of these corners, and I'm just going to start moving it, and as you can see, that's going to scale that text up and make it a little bit bigger and a little bit easier to read. From there, I'm going to just bring it down the screen, and then because I have this selected, I can just tap on the arrow buttons to kind of fine-tune it as far as getting it into the right place that I want it to be. And then, as you can see over here in the sources section, this is at the very top, and it's covering up the TubeBuddy logo, and it's just not very flattering right now. So in order to fix that, what I have to do is I have to take the text and I have to bump it down a notch. And then now I've got that nice looking fade going in and out. So my text comes in, fades back out, the logo's still there, and everything still looks nice, neat, and clean. So what I'm going to do now is I need to make that text move. So I'm going to right click, and I'm going to go to filters. Here I'm going to click on the plus sign, and then I'm going to click on scroll. And then here, I want to show you this real quick. Let me move this over to here. So when I move this horizontal speed, you can see the text is going to start to move. Now I can make it really fast to where people are reading it really fast and all that, or I can slow it down, make it something a little bit more reasonable. In this case, I'm going to go with like a 31. That's fine. So it's still coming along, it's still moving along, but it's not so much that it's ridiculously distracting. So once I have that speed, I'm going to hit close. And then as you can see, the ticker is going to be flowing along there nicely during any time that I want that to show. So now we have two scenes. We have the main plane, and then we have the main ticker, okay? So the next thing that we want to do is we're going to duplicate that main plane again, and I'm going to call this one cam with chat, okay? Now with this one, we're going to do that same exact thing where I'm going to go to the plus, I'm going to add an image here, and this is going to be, I'm just going to call this one background because there's not a lot that's going to be happening in this scene. So I'm going to find that, and then I'm going to bring it in. Now, as you can see right here, the area that I have right here, it's already taken away. So I saved this image here out of Photoshop as a transparent PNG. Okay, so basically I removed the background layer so that I could save it so I'd be able to see through this. Now, another option that I would have had was to make the same graphic, but actually put a square on the screen in this area, and then grab my picture or my video image there and scale it down and try to fine tune it to make sure that everything is in the right place and the right size. But what I'm going to do instead is I'm going to lock this background, so I'm not clicking on it. I'm going to click on the webcam, and then now you can see when I move this, because I have that area transparent, it doesn't have to be perfect. I can just move it in, kind of scoot it into place, and then fine tune it a little bit with my arrow keys, and then there we go. I don't have to spend a ton of time sitting there trying to make everything match up. And in addition to that, I also get a little bit of a drop shadow over here to kind of give it a little bit of an additional look, so to speak. Now, the next thing that we want to do is something that I get asked about a ton, and that is showing the chat on the screen, because we have to put it in this little area over here so that viewers can see the live chat for this particular scene when we show this. So what I'm going to do here is I'm going to bring my live streaming page over, and I'm going to show you how to do this. When you go to your live streaming page on YouTube, you click here, and then you click on Pop Out Chat. When you do that, they're going to give you a URL up here at the top. You want to copy that, and then you can close it. And then after you close that, you can actually just move that right out of the way or close the window or whatever, and it's okay because you have that URL. That's all that you need. So what I'm going to do here is I'm going to go down to plus in my scenes, or in my sources, actually. I'm going to go down to plus. I'm going to choose browser source. Here I'm going to make this chat as the identifier.
And then you can see here, there's already a URL here going to OBS project, but I'm going to override that with my YouTube chat, okay? That URL that I just got. Now, because I've already built this for, the thing that I'm doing with TubeBuddy, so I've already built this, I already know that the width of this is going to be way too big. So I'm going to take the width of this down to 520, and I'm going to take the height to, let's say, let's do 890, okay? From there, I'm going to hit OK, and then you'll see the chat is now popping up on the screen. I just grab that, and I bring it over here and get it into place, okay? I could leave it like this, and it would be perfectly okay. I mean, if it just looks like this and you have the white on there, it's fine. But if you look at this from a design standpoint, I have all of these dark elements. I'm wanting people to focus on the TubeBuddy logo down there, which, by the way, if you don't have TubeBuddy installed yet, I've got a link to that in the description. But I want to draw people's attention to the TubeBuddy logo, and I want them looking at my screen. I want them looking at the chat as well, but I don't want them to be overwhelmed and distracted by what's going on in the chat. So what I have to do for that is I have to put in a CSS code, which I have in a notepad here, and I'll actually put this as a resource link down in the description below. But I have a some CSS code that I'm going to drop into this chat option right here. So I'm going to right-click on chat, I'm going to hit properties, and I'm going to delete this in the CSS area right here, and then I'm going to paste in all of this code right here. And again, I'm going to have a resource link to this down in the description, so you'll be able to get this same exact code down in that description if you want this. And then I'm going to hit OK, and then you'll see that it made my text bigger, and it also took away that background, so now it's not as distracting. It's still distracting, especially when it's all moving around, but it's not as distracting. So what we've done there is now we have this chat area so that people that are watching can see their chat come up on the screen, right? So I'm just going to click on something there, and then that fills that box out, and you can see right there, as you can see, can you see this that I put down there? It completely fills that box out and makes everything look nice and clear. Now, to be picky, I would want to scoot this down here just a tad, because that's a little bit too tight up there at the top for me. So I would bring it down to something like that, maybe bring up the bottom a little bit, but you can fine tune yours when you're making your graphics for your live stream. So now we have three chats. Now we have three scenes, in here. We have the main plane, we have the main ticker, and then we also have this, which is our cam with chat. So we're starting to create, a nice production here, right? Like, this is looking really professional. It's looking great. Everything is nice and organized, real easy to follow what's going on. And a really awesome thing about this is down here in the sources part, you don't have just a humongous pile of stuff down there, right? You can just switch it as you need it instead of having a bunch of things that you have to sort through in order to make these same things happen. And you don't have to drag things around all the time and resize the frame and all of that. So this makes it so much easier. So the next thing I'm going to do is I'm going to copy the main plane again. And this one is going to be split screen. Now, this comes in really cool if you are a gamer or if you are a business owner and you want to have your screen, and then you also want to have something happening on the side over here to where you can have like your social media information, or you can have like a product that you're talking about, or you can have bullet points of what it is that you're talking about while keeping yourself on the screen. This part is really cool. So what I'm going to do here is I created that split screen scene, and as you can see in the sources here, the only thing again that we're starting with is just the webcam by itself. So what I'm going to do here is I'm going to go and I'm going to grab the image that I made. And then with this, you can see I'm kind of, covered up there or whatever, but the graphic over here is where you would put, there we go, is where you would put the, any additional information that you have. But what you would do in this case with the webcam is I'm going to lock that. And then with the webcam, I can just take this, drag it over, just like this. And then there we go, I'm nice and centered. So let's say that I'm talking here in the main plane, and then I want to say something about, whatever it is I'm talking about, then I would click on this, and you can set this up. You can set up a bunch of these so you can just rotate through them as you're talking about things, or when you want to, you can go to the cam chat and things like that. So now that we have this in place, I want to level this whole thing up to really make it pro. I'm sure you've seen the news where, they're talking about something and then they transition into something else, and then they have like a logo or some type of graphic that comes up on the screen to actually make that transition to happen and make it kind of smooth and pro looking. Well, that's what we're going to do. So what we're going to do for that is I'm going to
click on studio mode over here, and that's going to split the screen. So if you're not familiar with OBS right now, if you're not familiar with OBS yet, basically how this works is over on this side of the screen, the one that has the ticker on it right now, this side of the screen is basically a staging area, and then the other side of the screen where we have the split screen, that is actually what would be live that your viewers would be seeing right now. So if you're recording something in OBS or if you're actually streaming in OBS, the one over on the right where the split screen is right now, that is your actual live area. That's what's actually being streamed or recorded. And over on your left, that is your staging area where you actually build everything and you get it ready to go over. So what we're going to do here is we're going to add that transition so that we can really make this look cool. So here I'm going to go over the scene transitions. I'm going to hit plus, and then I'm going to select Stinger. Now here I'm going to do icon transition. I'm going to hit OK. And it's going to give me the option to go find it, and I'm going to go find it.
Mac OS and Linux, and it loaded via that link. So we got the settings like start streaming, then start recording, then studio mode, then settings and exit, and you can see the screen that we got. And now let's go to the YouTube website through which you can get your server key, which is very necessary to live stream your content. So if you guys are following me on YouTube, so you might know that I have already put up 2 live streams, which is Baby vs YouTube Rewind 2018 for the most disliked video, and the second one being PewDiePie vs T-Series, which is the talk of the town in YouTube, using OBS Studio. Upload button, you can see 2 options: uploading a video and going live. And when you press going live, the second page that you are being directed, you can see the basic information stream. When you scroll down, then you can see the encoder setup, in which you can see the server URL, and most used one is OBS Studio. So let's go to the settings and the servers through first you need, I'll just rename it. It can be a non-copyright music or a copyright music. Just if you want a copyright strike on your YouTube live stream. Just kidding, guys. So the next thing that you want to add is through the browser. So you know guys, the 2 live streams that I did on my channel was for the live subscriber count and the live likes and the dislikes on 2 particular videos. So we needed 2 URLs for that. So we'll just browse through that through the internet, and we'll get the livecount.net, and then we can get it. And first let's open the browser, just put in the name, then press OK for that, and here we need to put the URL. So let's go to Google Chrome, and then here we'll search for the live subscriber count. I'll just search for PewDiePie here, and then PewDiePie live counts. Yeah, click on the channel name below to change channels. I'll just give the name here, PewDiePie, and press OK. After that, we can get the subscriber count. Just copy the URL that you have on your Google Chrome browser and then paste it on the OBS Studio. So here, after you paste it and after you press OK, then you will get the refreshed page of the browser on your OBS Studio. And after this, you can transform the browser as well. The dimensions of the browser, if you want to crop it, you can crop it. If you want to enlarge it, you can enlarge it. You'll go to the transform, edit transform, and when you click edit transform, there are options such as position and then rotation. So we'll search for the crop option with the left, top, right and the bottom portion, and I'll just adjust with that. It depends on the screen resolution as well, guys, so you can watch it in your screen as well, and you can customize. I'll just give the link to the live subscriber count in the link description below, so you can just check it out if you want to make a live stream for PewDiePie vs T-Series. So that was just the beginning of that video, guys, and these are the 2 videos that I have, the Baby versus YouTube Rewind. As you can see, that YouTube Rewind is the most disliked video now, and this is PewDiePie vs T-Series. I encourage you guys to subscribe to PewDiePie if you're not, and subscribe to Tech in Motion as well. If you guys like this video, then give a thumbs up, share and subscribe, and subscriber count in the link description below, so you can just check it out if you want to make a live stream for PewDiePie vs T-Series. So that was just the beginning of that video, guys, and these are the 2 videos that I have, the Baby versus YouTube Rewind. As you can see, that YouTube Rewind is the most disliked video now, and this is PewDiePie vs T-Series. I encourage you guys to subscribe to PewDiePie if you're not, and subscribe to Tech in Motion as well. If you guys like this video, then give a thumbs up, share and subscribe, and do remember to subscribe to PewDiePie. Let's see you in the next one.
Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and spelling. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message, and the word choice is bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you craft compelling, understandable writing that makes an impact on your reader. Much better. Grammarly works. जी तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, चाहे फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर हो, और आप पैसे कमाना चाहते हैं या किसी वीडियो के नीचे 64 बिट विंडो है, तो हम यही सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं। आपने क्रिएट ऑटोमेटिक हुआ है, अगर ये ना हो तो आपने प्लस के बटन पर क्लिक करके एक सीन क्रिएट करना है और उस सीन का कोई भी नाम रख लें, लाइव स्ट्रीमिंग रख लें, कुछ भी रख लें। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप लोग देखें दूसरे ऑप्शन में है सोर्स। अब सोर्स में आपने क्या करना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है और अब आपने जो लाइव स्ट्रीमिंग चलानी है, मैं तो जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है PewDiePie वर्सेस टी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग। उससे रिलेटेड आपको एक थंबनेल रेडी कर लेना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक थंबनेल वीडियो के लिए रेडी किया हुआ है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर इमेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो आपने बना लेनी है। जैसे भी आप बना लें, एडोब पर बना लें, कोरल आपके पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह सब कुछ और सारा वो पड़ा होना चाहिए। तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स, आपके पास एक अदद म्यूजिक वीडियो होनी चाहिए जो आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, या अगर आप गेमिंग कर रहे हैं और आप खुद बोलना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जी फ्रेंड्स, इस वीडियो को VLC मीडिया प्लेयर पर ओपन करने के बाद ऑडियो को, जो भी आपका म्यूजिक होगा, और इसको यहाँ पर क्लिक कर, उसमें आता है सॉफ्टवेयर इमेज, फिर आप विंडो कैप्चर पर क्लिक करेंगे और वहाँ से अपनी उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, हम इमेज को कर लेते हैं और उसके बाद ओके से ब्राउज़र में जाके ब्राउज़र बटन पर क्लिक करेंगे। ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, जैसे जैसे करना चाहते हैं। सोशल ब्लेड आपने देखा होगा, एक नेटवर्क है, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोशल ब्लेड। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप उन तमाम चैनल्स की लाइव सब्सक्राइबर काउंटिंग जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं टॉप लिस्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। आप किसी भी चाहे तो आप 50 चैनल्स की जो है वो लाइव चला सकते हैं, मतलब कौन कौन सी इनमें टॉप पर जा रही है। टी सीरीज़ को मैंने ओपन कर लिया और PewDiePie नीचे आ गया काफ़ी सारा, तो PewDiePie को हम देख लेते हैं कहाँ पर है जी, ये PewDiePie, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टी सीरीज़ आ गया। टी सीरीज़ की हमने यहाँ पर लाइव सब्सक्राइबर काउंट के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद इसको PewDiePie के भी लाइव सब्सक्राइबर काउंट के बटन पर क्लिक करना है। अब ये दो काम हमारे हो चुके हैं। अब हमने फर्स्ट किसको रखना है, क्योंकि फर्स्ट हमने PewDiePie की लगाई हुई है, तो PewDiePie की ही लगाई हुई है, तो हमने PewDiePie के लिंक को कॉपी करना है यहाँ से Ctrl+C, और उसके बाद अपने OBS स्टूडियो में जाना है और प्लस के बटन पर क्लिक करना है। सोर्स में प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउज़र के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे और जनाब यहाँ पर उसका लिंक डाल देना है। जो हमने वहाँ से लिंक कॉपी किया था वो हमने यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर विद में वाइट हाइट, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी रखना चाहते हो। मैं एक बार RG जो है वो 1500 + 800, बाद में हम इसकी सेटिंग कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। आप चाहे इसको इसी तरह ओपन कर लें, चाहे चेंज करके ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक हमारे पास ये स्क्रीन आ चुकी है। अब हमने इसको सेट करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसफॉर्म इस ऑप्शन पर जाना है और एडिट ट्रांसफॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने 500, उसके बाद यहाँ पर भी आपने 500 देना है। जी जनाब, ये हमारी दोनों साइडों से इमेज जो है वो बेहतरीन हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 350 दे के देखते हैं क्या हिसाब बनता है। 350 पे नहीं, ऊपर से ज़्यादा कट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 330 कर लेते हैं। 330 में भी नहीं हो रहा जी, 300 कर लेते हैं जी। 300 हमने टॉप का कर लिया और उसके बाद बॉटम का क्या करते हैं, उसका भी 280 करके देखते हैं जी। ये हमारा ओके हो गया। और जी ये हमने अब याद रखना है क्योंकि दूसरे इमेज की भी हमने यही सेटिंग करनी है। 500 500 300 280 ओके हो गया। इसको हम पकड़ के अब चाहे जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, सेटमेंट कर सकते हैं, खुद से एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
वो हम उसके हिसाब से इसको करेंगे जब दूसरा ले आएंगे इमेज। अब हमने फिर प्लस के बटन पर क्लिक करना है और ब्राउज़र के बटन पर क्लिक करना है और इसका नाम लिख देना टी सीरीज़ और ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब फिर वहाँ से हमने लिंक उठाना है दूसरे ब्राउज़र का और जी इसको लाकर उसमें पेस्ट कर देना है। अब याद रहे कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये ब्राउज़र बाद में चलते चाहिए तभी जाके लाइव स्ट्रीमिंग होगी, चाहे फिर आप इनको क्लोज कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर 1500 600 की बजाय 800 कर लेता हूँ और याद रहे कि ये मैं अपनी सेटिंग कर रहा हूँ, आपकी डिस्प्ले के मुताबिक होगी, आप चेक कर लेना, जो आपको बेस्ट लगे आप उसके मुताबिक करना, ठीक है। अब फिर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म के बटन पर क्लिक करता हूँ, एडिट ट्रांसफॉर्म के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 500 और जी इधर भी 500 कर देते हैं जी और इधर जनाब 300 और जनाब इधर 250 280 किया था, ठीक हो गया। ये जनाब हमने क्लोज कर दिया, इसको भी हम पकड़ते हैं और जनाब इसी के मुताबिक कर लेते हैं, इसी साइज़ के मुताबिक कर लेते हैं, ठीक हो गया, ताकि हमें ईजी रहे और कोई भी हमारी जो है ना वो बुरी ना लगे इमेज। जी ये हमने लगा दिए जनाब। अब आप इनकी सेटिंग वगैरह करना चाहें, मज़ीद कोई स्टाइल वगैरह लगाना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल सा। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसमें क्या कुछ और ऐड करना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट भी लाना चाहते हैं, सब कुछ हमने ये क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आ जाता है जी हमने URL लेना है और लाइव स्ट्रीमिंग की होती है, हर चैनल की होती है, फेसबुक पेजेस की होती है, वो आपने कहाँ से लेनी है। पहले हम जो है यूट्यूब चैनल की बात कर लेते हैं कि यूट्यूब चैनल की हमें कहाँ से मिलेगी और साथ ही एक छोटी सी सेटिंग है जो कि आपको करनी होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या करनी है फ्रेंड्स, आपने चैनल में जाना है, लाइव स्ट्रीमिंग पर क्लिक करने के बाद अब आपने जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल रखा हुआ है वो यहाँ पर सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी थंबनेल लगाया हुआ है, आपने यहाँ चेंज थंबनेल के बटन पर क्लिक करके वो अपने वाला थंबनेल अपलोड कर लेना है जो भी होगा और उसके बाद यहाँ पर आपने टाइटल दे देना जिस टॉपिक की आप लाइव स्ट्रीमिंग चलाना चाहते हो, नीचे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देनी है और उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो होती है सर्वर URL। मतलब अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर चलाना चाहते हैं तो आपको ये कोड होता है, एक URL होता है, ये कॉपी करना है और उसके बाद OBS में जाना है। I'm going to show you how to make your live streams look professional using OBS, and we're starting right now.
Hey guys, welcome back to Tech in Motion, and this is Joel here. Today we're gonna look on how to live stream your content on YouTube or on different platforms using a free and open source software which is known as OBS Studio. The full form of OBS is Open Broadcaster Software. It is a software which runs on Windows, Mac OS and Linux, and it is a very small package file which easily runs on all the platforms, which also have a very low graphics card as well. And you can find it on their website. I'll just give the link in the description down below. You can download it via that link. And now we'll open that software. I already have that on my desktop. So if you guys are following me on YouTube, so you might know that I have already put up 2 live streams, which is Baby vs YouTube Rewind 2018 for the most disliked video, and the second one being PewDiePie vs T-Series, which is the talk of the town in YouTube. So let's just see which are all the scenes and the sources and the mixer and all the scene transitions and the settings. So we got the settings like start streaming, then start recording, then studio mode, then settings and exit, and you can see the screen that we got. And now let's go to the YouTube website through which you can get your server key, which is very necessary to live stream your content using OBS Studio. For starting off with your stream, first you need to go to your YouTube channel, and then on your upload button you can see 2 options: uploading a video and going live. And when you press going live, the second page that you are being directed is for your webcam and your microphone access, but you need not give the permission for that. On the bottom right hand side corner you can see encoder live streaming, so you can click on that, and on the second page you can see the basic information, stream options and the cards, so you can give your information for your live stream there itself. But when you scroll down, then you can see the encoder setup, in which you can see the server URL and then the stream key. The stream key is the most important part of your streaming through a third-party application such as OBS Studio. There are many such applications which you can use for live streaming, but the free one and the most used one is OBS Studio. So let's go to the settings. Then in the settings, the second option is stream. The stream key is very important, guys, so you need to put the same stream key that you have copied from your YouTube channel, and you need to paste it. And as you can see, there are many platforms that are being supported and the servers. Then you need to select it, then press OK. Then you can go to the general settings if you want to change that, then the output, then the audio, then the video, how many frames per second, the resolution, the hotkeys and the advanced options. So that's how you can stream. You can start streaming on your channel through OBS Studio. And now let's see how to start off just a basic or just from scratch. I'll show you. First you need to click on the scene option. You just need to give the name for the scene. Then in the sources you can add many sources as you want, and you have different options such as image source, media source, image slideshow or browser. So I'll just select the background for it. I'll just rename it and I'll browse through my desktop to find the background. I'll just go to my downloads and just click that image, and I'll just open it, and that will be the background for my live stream. Just after the background is set on your OBS Studio for your scene through the sources, then you can add the media sources as well. The media sources can
Click on subscribe button, press on bell. फ्रेंड्स हमारे फ़ोन से इजीली 24/7 लाइव स्ट्रीम चला सकते हैं। बट फ्रेंड्स अब आप सोच रहे हो कि कैसे चला। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में थोड़ा कम आएगा परचेज करने के लिए ओनली फॉर 1 मंथ के लिए। बट फ्रेंड्स 1 मंथ के लिए हम फ्री में स्ट्रीमिंग कर सकते हैं कामा 13 से, और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट बना के इसको यूज़ कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आपका एक ऐप आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप, आपको इस ऐप को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। अब फ्रेंड्स ये मैंने तो इसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमसे भी VPS परचेज करोगे तो आपको इस तरीके से एक IP एड्रेस मिलेगा, यूज़र नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उसके थ्रू अपने VPS के अंदर लॉगिन कर लो। बट फ्रेंड्स जो आपको बताऊंगा भी नहीं फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक नॉर्मल VPS की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको IP एड्रेस मिलता है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे IP एड्रेस को ऐड करके इस तरीके से कनेक्ट करूँगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वापस ये यूज़र नेम मुझसे पूछ रहा है तो यूज़र नेम चला रहा हूँ। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रिपेयरिंग विंडोज़ चल रहा है। अब फ्रेंड्स जैसे आप इसके अंदर फर्स्ट टाइम अपने फ़ोन के अंदर या PC के अंदर कहीं पे भी जब VPS को लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने पे यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले सर्वर मैनेजर को क्लोज़ करना है। ये फ्रेंड्स बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम ओपन होता है ऑटोमेटिकली। अब आपको क्या करना है, इसे क्लोज़ करके यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे आस्क में लेटर कर देंगे और आप देख रहे हैं आपके लिए कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड है जो एंटर कर दूंगा। वापस कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे जो कनेक्शन है मेरा VPS ओपन हो गया है। मैं आपको यहाँ पे OBS को ओपन करके बता देता हूँ। और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं भी अभी इसी से स्ट्रीमिंग को मैनेज करता हूँ मेरी स्ट्रीम को, तो आप भी इसे ईजिली कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप ये सोचते हो कि अगर आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, डेटा ऑफ हो जाएगा तो ये कैसे चलेगा। फ्रेंड्स कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऊपर ईजिली 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके क्रॉस के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आपके बैकग्राउंड के अंदर अगर आपने VPS के अंदर स्ट्रीमिंग चला रखी है तो आपकी स्ट्रीमिंग ऑफ नहीं होगी, बल्कि जो आपका फ़ोन है उसके अंदर से RDP लॉग आउट हो जाएगा, जिससे आपको कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से ऑटोमेटिक जो है लाइव स्ट्रीम चला सकते हो फ़ोन के थ्रू। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। एक बार में मेरे 1000 से ज़्यादा लोग स्ट्रीम को देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी बफरिंग के। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं इसमें $88 का प्लान यूज़ में लेता हूँ। आप चाहे तो इसमें 68 का भी ले सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे 1 मंथ के लिए हम $100 तक का सर्वर फ्री में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हम अकाउंट कैसे बनाए, आपको किस तरीके से फ्री में यह सर्वर। ये यहाँ पे मैंने कामा 13 सपोर्ट का जो मेरे पास मेल आ चुका है फ्रेंड्स, आप देख वेरीफाई भी हो जाएगा, समझा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से इसी चीज़ को देख के ऐसी वेबसाइटों को बंद कर इसके चक्कर में, तो इसलिए यही कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे क्रिएट सर्वर का हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेंड्स अब आप इसके अंदर सर्वर कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी तो फिलहाल आप कामा 13 के अंदर अकाउंट बनाइए और 1 मंथ के $1 तक का कोई भी प्रीमियम प्लान यहाँ से परचेज कर सकते हैं कामा 13 को, और वो भी कम्प्लीटली फ्री में। बस आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना है। तो हम यहाँ पे हमारे अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। बट फ्रेंड्स कामा 13 एक बहुत बढ़िया ट्रस्टेड साइट है और यहाँ पे आपको पैसे नहीं कटेंगे, बस ओनली क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई करवाना है, जिससे कि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग बाग इसके ऊपर फेक अकाउंट बना लेते हैं फ्री VPS के चक्कर में। तो इसलिए यही कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे क्रिएट सर्वर का हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेंड्स अब आप इसके अंदर सर्वर कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी तो फिलहाल आप कामा 13 के अंदर अकाउंट बनाइए और 1 मंथ के फ्री ट्रायल का मज़ा भी लीजिए, और मैं आपको अगले वीडियो के अंदर इसके अंदर सर्वर कैसे बनाते हैं वो भी बता दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। One of the most popular questions I get with how to live stream on YouTube 24/7 is how can I turn off my computer without losing my live stream? To second that, how do I set up a backup server to ensure my live stream is safe? I'll be answering these questions in this video. I just have to say thanks to everyone that participated in the 50,000 subscriber channel art giveaway. The winners will be shown on the screen now. If you did win, please contact me through Discord or my Twitter profile. Links are in the description. So how do I turn off my computer when live streaming? To do this, you will need to learn about a VPS or virtual private server. A VPS is In this video, I'm going to show you how to make a 24-hour a day, 7 days a week looped live
video using OBS and VLC player. So what you want to do is you want to make sure that you have OBS installed, and whatever version, you can see up here at the top, mine says OBS Studio 18.0.1 64-bit Windows. So because mine is a 64-bit install, I want to make sure when I install VLC that the VLC that I install is also a 64-bit. And the reason for that is for this next step. So what you want to do is you want to go down to your sources, you want to click on the plus icon, and you want to go to VLC video source. If you do not see this and you have VLC installed, it just means that you version of each file to be different lengths or something like that. A music live playlist. What you want to do that I grabbed right here out of Tuber to bring in, you can do also as a side note is, let's say that you drop a bunch of with everything and the other file comes in, and then once this file's finished, then you're going to 10 days of YouTube. So if that's what you're after, then this is a jackpot for you. What is up, everybody, and welcome to FLW Videos 2. In today's episode, I'm going to be showing you how to make a graph like this for yourself. Maybe you have seen a lot of these showing up on YouTube, and you've been very curious as to how it is even possible. So we're going to be walking through that today, and then of course talking about how to severely customize it, make it look really good, get some good templates going on. And it's actually not going to be that hard. The biggest piece of just kind of like difficulty to overcome is actually obtaining the data. I will talk about that briefly, but I do want to pass off the question to you. What would be a good way to obtain that is, of course, just the data. By the way, I'm going to be using the website known as flourish.com. I will put a link in the description of edit view. Minimize this, and we're going to pull it up into the edit view. The first thing that we need to take a look at is, of course, just the data. By the way, I'm going to be using the website known as flourish.com.
I will put a link in the description. Make sure you check that out. But I would highly recommend you to watch this first just so you can see how it works. That way you're not having to figure it out on the fly. So what we're going to end up having to do is we're going to have to assign different labels to our spreadsheet once we end up creating it. And as you're noticing here, we've got just a kind of timing sequence related to it. So what ends up happening is it reads the graph over time from left to right, and then it's just going to cycle through it. And as you can see on the right, we have some different labels. And a couple of these are like really important to focus on. For example, we have the image label, and as you can see, it is a blue color and it shows that we've got it on column B. So all you have to do is just type in whatever column you want it to pick up. Let's say, for example, I do using the website known as flourish.com. I will put a link in the description. Make sure you check that out. But I would highly recommend you to watch this first just so you can see how it works. That way you're not having to figure it out on the fly. So what we're going to end up having to do is we're going to have to assign different labels to our spreadsheet once we end up creating it. And as you're noticing here, we've got just a kind of timing sequence related to it. So what ends up happening is it reads the graph over time from left to right, and then it's just going to cycle through it. And as you can see on the right, we have some different labels. And a couple of these are like really important to focus on. For example, we have the image label, and as you can see, it is a blue color and it shows that we've got it on column B. So all you have to do is just type in whatever column you want it to pick up. Let's say, for example, I do column C. And then when I press enter, it's going to update it and show that column C is going to be a picture. But I already have it assigned, so it's like, hey, what the heck you doing? So let's go ahead and move that back to B. So as you can see, we've got the different colors associated to it. We've got pink, which is just some type of category label, I think is what they'll call it. Yeah, so it's just a label. One other tip that I think would be interesting is it's a good thing to go ahead and put in your image URL. The reason for that is because you've got these over here and you can make it look really high class by putting in the different images. If you're not sure how to get the image URL, what I did was I went on Google, I typed in the different channels, and once I end up finding a logo that I thought fit it, all you have to do is right click it and do copy image address, put it into your spreadsheet, and then once you upload it, it will end up looking like this, but the website will be able to find it. So I think for the most part, this really isn't that big of a deal. It's not that complicated. We only have a couple of different pieces of information to take a look at. By the way, once you get your spreadsheet done, you'll just click import your data and put it in there, and then you'll assign your different labels. It'll try to do it itself, so for the most part, you should be good. Just keep in mind that you can type in the name of the columns here to adjust it. So that's all that you have to do on the back end. The next set is going to be related to what's going to happen on the color as. So we've got some just because one of the options I think made it look really weird as far as the default was, and then you can of course select the color that you want for it.
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो रेसिंग बार आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। आजकल यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारा ट्रेंडिंग टॉपिक है रेसिंग बार को बनाना। बहुत ज़्यादा लोग इसको बनाना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के ज़हन में है कि ये बनाना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी सारे लोगों के ज़हन में है कि ये वाकई मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया रेसिंग बार आप लोग किस तरह बना सकते हैं, लेकिन वो वीडियो अनकम्प्लीट थी। इनक्लूड से मुराद ये है कि उसके अंदर कुछ इशू आ गए, डबल वॉइस का काफ़ी लोगों ने कहा कि इशू आ रहा है। जब मैंने देखा तो उस वक्त टाइम जा निकल चुका था, लेकिन अब मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना को पूरी। Hey, what's up guys, Matt Parr here. Today I'm going to be showing you an incredibly weird niche on YouTube that's going viral right now that you can use to make money on YouTube. And get this, you don't even have to show your face and you don't even have to make videos. This is going to allow you to make money on YouTube without ever making any videos. I'm going to show you exact example channels doing this so you can get an idea of what to do. I'm going to show you how you can start doing this as well. And I'm going to show you how you can generate these videos super quickly. So without rambling on, let's jump on my computer right here so I can show you exact channels doing this. So the first channel we're going to be taking a look at is this channel right here called Wawa Moo Stats. Now, the niche that we're talking about here are channels like this. You may have seen channels like this on YouTube getting a ton of views, and there's a bunch of them that I'm going to be showing you on this video here today. But taking a look at this channel, history and projection right here, they're making, show you a ton of channels doing this, 126,000 views every single day on their channel. And as you can see, the reason they're doing so good, this channel in particular is doing so good, is because they upload pretty frequently. As you can see, 3 days ago, 6 days ago, 1 week ago, this channel right here actually uploads pretty frequently. Part of the reason they're doing so well on YouTube, getting so many views and potentially making so much money just from ads alone from their channel. So let's take a look. Here's yet another channel doing, guess what? Be getting these silver play buttons and making so much money on YouTube with these simple videos. And let's take a look at the statistics for Captain Gizmo right here. As you can see, between $7,000 and $120,000 a year with these super simple videos, guys. As you can see, best-selling modern consoles from Xbox to whatever the newest console is. As you can see right here, they show them over time and they show the statistics over time. Let's take a look at yet another channel called Data Ranker. As you can see, these same types of videos. These videos, this channel is visualization. So I'm going to show you just how easy it is to generate these types of videos using types of graphs and all this stuff. But the majority of these channels are all following a simple guideline and they're all doing a single type of video. And I found the best one is this right here, the bar chart raise. This is pretty much what all of them are doing. Now, the one you're going to want to choose out of these is this one right here, images with captions. So once you choose to create a new project, scroll down right here to the right hand side and click images with captions. So once you click that right here, it's going to actually make a visualization for you, but it's going to be pre-populated. And look at this, it looks like just all those videos that I was just showing you guys. This is basically those videos to a T. Now what's so cool about this software is right now, so let's just enter that right there, and then we go back to preview, and as you can see, instead of China, it is showing dogs. And then let's say we wanted to change that image right there on the bar graph. As you can see right now, it is a Chinese flag, but let's say we wanted to change it to a picture of a dog. So in order to do that, you go back to data right here, and then you go down and find dogs right there. And as you can see, there is the image URL right there. You're going to want to put in a different image URL. So one of the best places I like to find completely free stock images to use within your videos, no attribution required, is a website called pixabay.com. It's an amazing website. You can literally just download pictures to use in any of your YouTube videos. So to use Pixabay, you just go to pixabay.com and then you can search any image. Let's say we just want to search for a dog, and we just search that right there. And then as you can see, if we go down here and let's say we wanted to choose this image right here of this dog, and then what you're going to want to do is right click this image and click copy image address. And then once you copy that address, you can go back here to right here and you can replace this address with the address of our picture of a dog. So if we click that right there and we go back to preview, as you can see, the picture has now changed. And let's make sure again that
that says dog, and we put that in right there. Now, as you can see, if we go back, now it says dog, and it shows that dog right there. So the possibilities are endless with all the videos that you could generate with this. You could do the top 10 most popular dog breeds from 1800 to 2020 and just show how it's changed over time. So now you're probably wondering, where am I going to actually get the data for this, and how do I actually make these into videos? So to get the data for these, you can actually just go to Google and search the top 10 most popular dog breeds over time and put them into your videos, or you can do it in an even better way that I'm going to show you right now. And that is by going to any of these channels right here. For example, let's just go to Data is Beautiful, one of the biggest ones right here. So as you can see, if we go to this channel and we click on one of their videos, this one called The Most Popular Sci-Fi Movies from 1968 to 2019. And wow, look at this, by the way, guys. This channel has only uploaded twice in the past month. That's absolutely crazy. They literally upload 2 videos a month, and they're getting almost 10 million views a month. That's absolutely insane. Sorry I got a little sidetracked. I'm just so surprised that this channel is getting this many views just with these simple videos. So if we go to this video right here, Most Popular Sci-Fi Movies, and we click that, as you can see, it's the same type of video format that's in all of the videos. And then if we go down here and we click the show more in their description section, as you guys can see, they literally show where their data source is. So they show data source movie ticket admission reports. So what you're going to want to do is go to these videos and then go down to movie ticket admission reports, highlight it, right click, search Google, and this will open a new tab showing literally where you can get the stats for these different videos. And if you just click any of these stats right here, as you guys can see, here is literally where you can get these stats. Just plug them into this software called Flourish Studio into the data section, the stats for each of the years, and you can even upload data files as well. And these videos are that easy to make. So now how do you actually make these into videos that you can upload on your channel? So if you watch any of these channels that I'm showing you guys as examples right here, you'll notice that they have music in the background of most of their videos. So to get music, I'm going to show you the #1 place that I recommend you go to. And to get there, you're first going to want to go to your channel dashboard on YouTube, and it'll look something like this. And then you're going to want to go down to the left-hand side and click Creator Studio Classic. You can skip this survey or answer the survey, doesn't matter. And then once this loads right here, as you guys can see, if you go down to the left-hand side right here, and then you click Create, this is going to actually bring you to what's called the YouTube Audio Library. And YouTube actually gives you tons of free music to use in your videos. And this is kind of a little known thing. Not that many people know that you can get completely free music to use in the
সাবস্ক্রাইব করুন আর কেআরবিডি চ্যানেল এবং বেল আইকন চাপুন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। সাবস্ক্রাইব করুন আর কেআরবিডি চ্যানেল এবং বেল আইকন চাপুন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য।
Hey, what's up guys, Matt Parr here. Today I'm going to be showing you an incredibly weird niche on YouTube that's going viral. What is up everybody and welcome to FLW Videos 2. In today's episode, I'm going to be showing you how to make a graph like this for yourself. Maybe you have seen a lot of these showing up on YouTube and you've been very curious as to how it is even possible. So we're going to be walking through that today and then of course talking about how to severely customize it, make it look really good, get some good templates going on. And it's actually not going to be that hard. The biggest piece of just kind of like difficulty to overcome is actually obtaining the data. I will talk about that briefly, but I do want to pass off the question to you. Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि फ्रेंड्स आप भी किस तरीके से अपने एकदम स्मूथली स्ट्रीम चला सकते हैं टॉप 50
you